Infoanil. Everyone, welcome to the channel Infoanil. So this video is for all the persons who wants to write code using the Python Turtle library. So Python Turtle library का यूज करने के बाद आप काफी सारे अट्रैक्टिव डिजाइन बना सकते हैं अपने सिस्टम में, लाइक ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन। सो टर्टल लाइब्रेरी में कोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल होना चाहिए। सो बेसिकली दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट हम सीखेंगे कि कैसे पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, देन सेकंड वी विल नो हाउ वी कैन राइट द कोड। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया अपने सिस्टम में तो जस्ट वॉच हाउ वी कैन इंस्टॉल द पाइथन इन आवर सिस्टम। So friends, now we have seen that how we can install the Python in our system. Let's know how we can write the code in Python Turtle library. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सर्च बॉक्स में जाना है। इधर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है IDLE। तो व्हेन आई विल टाइप दिस कीवर्ड, मेरे सामने ये वाला एप्लीकेशन का सजेशन आता है, IDLE Python 3.9 64 bit. I will open this. Okay, so this is the Python window then where I can write my code, like print hello. So it will automatically, so I will open a new file. So this is my new file and I want to save it somewhere in my Explorer system. So go to the file option, then click on this save button. I will give the location to desktop. Okay, so give your name test turtle. So basically we are going to make a simple turtle program. So I will name this as test turtle and will save this. So अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो थिंग है वो हमें करनी है import turtle. We will import the turtle library. So we have imported the turtle library. Now next thing that we should do, we will create an object of the turtle. So let me give the name of the object like T. So turtle. So from this line we have created an object for the turtle. So let me save this code, Ctrl+S, then run the program. Okay, the program, so this is our window, this is our Python turtle graphics window. So what we are going to do, we are going to make a square. So for a square I will move my turtle forward. So there are also auto suggestions, so forward, and I will pass some integer value into it. तो मैं इसके अंदर अपना 100 वैल्यूज दे दूंगा। तो अब मैं इसे सेव करूंगा, देन आई विल रन द प्रोग्राम अगेन. ओके, एज यू कैन सी it will move forward by 100 values. Here you can see. Now for making a square should be turned into left side. So okay, so I will t dot left. इससे क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में बेंड हो जाएगा। तो 90 डिग्रीज में हमको उसको बेंड करना है. Okay, so this will now bend will 90 degree. Now I will again save the code and will again run the, okay, so this will move forward and bend. Now it will again move forward by the t dot forward 100.
So from this line I will again save the code and will again run. So it will run है कि अब ये पहले फॉरवर्ड मूव किया 100, देन ये 90 डिग्रीज पर टर्न किया, देन अगेन फॉरवर्ड मूव किया, देन अब हमें क्या करना है, फिर से इसको 90 डिग्रीज पर टर्न करना है. फिर से 90 डिग्रीज पर टर्न करने के लिए वी विल राइट लेफ्ट 90, देन अगेन फॉरवर्ड मूव कराना है हमें इसे 100. then I will save my code and run this code again. तो ये फॉरवर्ड गया 90 डिग्रीज पर टर्न किया, देन मूव फॉरवर्ड किया, देन 90 डिग्रीज पर टर्न किया यहाँ से, देन मूव फॉरवर्ड किया 100. तो द लास्ट थिंग दैट, फिर से इसको लेफ्ट पर टर्न करना है मुझे, लेफ्ट 90 डिग्री, देन टी डॉट फॉरवर्ड. अब ये फिर से 100 डिग्रीज पर, सॉरी, अब ये फिर से 100 पॉइंट्स आगे बढ़ेगा. Now I will save the code and again run. So as you can see, स्क्वायर अपना completely बना लिया है कि ये अपना स्क्वायर बन गया है अभी. So guys, that's all for this video. In this video we have make a simple square object from the Python turtle programming. So this is just a basic program. In future I will also teach you how you can make other type of designings, very attractive designings. So stay tuned and please subscribe this channel. Thank you so much for watching the video.